बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों दीन दुनिया में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अहले किताब से निकाह उस वक्त जायज़ है जब वो हकीकतन आसमानी किताब के मानने वाले और उसके ताबेदार हों, देहरिये ना हों। अगर तहकीक से किसी औरत का अहले किताब होना साबित हो जाए तो उससे अगरचे निकाह जायज़ है, ताहम चंद मफासिद की वजह से मकरूह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर मुबारक में इस पर सख्त नाराज़गी का इजहार फरमाया। मुसलमान मर्द को अहले किताब औरत के साथ इस शर्त के साथ निकाह की इजाज़त है कि वो मुसलमान मर्द इस्लाम की कवी और रोशन हुज्जतों और मजबूत दलाइल के ज़रिए औरत उसके ख़ानदान के लोगों को इस्लाम की तरफ माइल कर सके। अगर ये अंदेशा हो कि निकाह के बाद खुद मुसलमान मर्द अपने ईमान को कुर्बान कर बैठेगा तो फिर मुसलमान मर्द को निकाह की इजाज़त न होगी। दूसरी जानिब चूँकि औरत तबई तौर पर भी और अकली तौर पर भी कमज़ोर होती है और शौहर के ताबे होती है, इसमें यह ताकत नहीं कि मर्द को अपने ताबे बना सके। इसलिए शरीयत इस्लामिया ने मुसलमान औरत का अहले किताब मर्द के साथ निकाह करने का ममनू करार दिया ताकि इसका दीन सलामत रहे। यह हवाले देने का मकसद आज का मौजू है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से कैथरीन नामी खातून ने सवाल किया। उसने कहा कि मेरे वालिद मुसलमान हैं, मेरी वालिदा ईसाई हैं। सूरह काफिरून की आयत का तर्जुमा है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इसी तरह एक सूरह बकरा की आयत है जिसमें लिखा है कि तमाम यहूदी और ईसाई जहन्नुम में जाएंगे। इस खातून ने दावा किया कि ये दोनों आयतें एक दूसरे से मुतसादिम हैं। अगर सूरह बकरा की आयत को देखें तो इसके मुताबिक जन्नत में फिर कौन जाएगा? Nama saya Nanda, saya mahasiswa, nama baptis saya Catherine. Sampai sekarang ayah saya Islam, ibu saya Katolik. Selama ini saya menganut surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyati, untukmu agamamu, untukku agamaku. Cukup sebentar. My name is Nanda and I was Christian. I am student. My father Muslim and my mother Catholic. And I believe and I practice the surah Al-Kafirun. Teruskan. Hal ini karena berdasarkan Al-Baqarah ayat 62. Tapi ternyata ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka. Mengapa ayat yang lain ini kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62 itu? Lalu siapa? Ya, cukup. But then there is the verse of Surah Al-Baqarah, verse 22, which says that, verse 62. Verse 62, and there's also that says Christian, Jews, they are not Muslim, they will be in the hell. Mengapa ayat yang mengatakan bahwa orang Nasrani dan Yahudi akan masuk neraka itu kontradiksi dengan Al-Baqarah ayat 62? And the expression that said that Christian and Jews that they will enter the hell, it contradicts with Al-Baqarah 62. Why? Lalu siapa yang dimaksud dalam Al-Baqarah 62 itu? And who is then in Surah Al-Baqarah in 62? नाज़रीन, ये सवाल बहुत ही उलझा हुआ था जिसमें खातून ने दावा किया कि कुरान की दो आयात एक दूसरे से मुतसादिम हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब देते हुए कहा कि कुरान में जगह जगह लिखा है कि जो भी कहते हैं कि जीसस खुदा के बेटे हैं वो कुफ्र कर रहे हैं। इस आयत का मतलब है कि ईसाई और यहूदी काफिर हैं। सूरह बकरा में कहा गया कि जो खुदा पर यकीन रखते हैं उनको इनाम मिलेगा। इस आयत का ताल्लुक इनाम से है, जन्नत से नहीं। जिन्होंने अपने माजी में गुनाह किए उन्होंने ये सवाल किया था कि क्या हम भी जन्नत में जा सकते हैं। इस सवाल के बाद ये आयत नाजिल की गई थी, अगर आप खुदा पर यकीन रखते हैं तो आप जन्नत में जाएंगे। यानी ये मुसलमान होने के बाद माजी के गुनाहों से मुताल्लिक किए गए सवाल के जवाब में कहा गया, ये नहीं कि ईसाई और यहूदी जन्नत में जाएंगे। The sister is asking a question that isn't the contradiction in the Quran when Quran says in various places. For example, Quran says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 72, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr, those who say that Jesus is son of Allah. That means the Quran says that the Christians and the Jews, they are kafir, they are mushrik, don't marry them. Here
In Surah Baqarah chapter 2 verse number 62 it says that as to those who believe in Allah and who believe in His revelation, whether they're Christian, whether they're Sabian, whether they're Jews, they will get the reward. This verse, sister, in context says, talking about when people come to the Prophet. If you read the tafsir of Ibn Kathir, it says that when the people came to the Prophet, those who were Christian, those who were Jews, those who were Sabian, that we did so many sins in the past, can we yet go to Jannah? Then this verse was revealed. Irrespective whether you're a Jew or a Christian, if you believe in one Allah and if you believe in His commandment, inshallah you'll go to Jannah. नाज़रीन, आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी जलाल में आते नहीं देखा होगा। यहाँ वो गम गुस्से में मुब्तला नजर आए। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि इंडोनेशिया में ये बात मामूल नजर आती है कि मुसलमान गैर मुस्लिमों से शादी कर रहे हैं और इसमें कोई रोक टोक नहीं, और मुसलमान वालिदैन अपनी बेटियां गैर मुस्लिमों को दे देते हैं। अगर मुसलमान वालिदैन अपनी बेटियां गैर मुस्लिमों को दे देते हैं तो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। I find it very common in Indonesia that Muslims are marrying non-Muslims and they do it so freely. And while traveling in these few days, I realized that Muslim parents willingly give their daughters to marry a non-Muslim. If a Muslim parents give their daughters in marriage to a non-Muslim, most probably even you will be held responsible. मुसलमान वालिदैन अपनी औलाद शादी के लिए गैर मुस्लिमों को कैसे देते हैं? अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मुश्रिका से शादी न करो जब तक वो ईमान न लाए। ईमान लाने वाली बेशक गुलाम हो। गैर मुस्लिमा से बेहतर है चाहे वो बरतानिया की मलिका हो, चाहे हुस्न की परी हो, लेकिन अगर वो गैर मुस्लिम है तो गुलाम मुसलमान खातून से बेहतर नहीं। इंडोनेशिया के लोगों को ये बात क्यों समझ नहीं आती? मुझे लगता है इंडोनेशिया के वालिदैन कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते। Why do the Muslim parents of Indonesia give their daughters and their sons in marriage to non-Muslims? How are you doing it? Allah clearly states in the Quran, in Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 221, that do not marry mushrika until she believes. A believing woman is far better than a mushrika even if she allows you. That means you do not marry a mushrik girl until she believes. A believing woman, even if she's a slave woman, even if she's a servant, she is far better than a Muslimah even if she allows you. She may be the Queen of England, she may be the most beautiful woman in the world, but if she's a non-Muslim, a Muslim woman who's a slave woman is far superior. Why don't the Muslims of Indonesia know that? The verse continues, do not marry a mushrik, do not marry an unbelieving man until he believes. A believing man, a slave man, a servant who's a poor man is far superior than a non-Muslim even if he allows you. He may be the most handsome man in the world, he may be the king of the world, but a man who has belief, faith is far superior. I think the Indonesian parents don't read the Quran with understanding. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं भारत से आया हूं और अगर वहां कोई गैर मुस्लिम से शादी कर ले तो 90% चांस है कि उसके घर वाले उसे घर से निकाल देंगे। यहाँ वालिदैन इस बात पर बहुत खुश होते हैं कि उनकी औलाद गैर मुस्लिमों से शादी कर रही है। इंडोनेशिया के मुसलमानों को आखिर हो क्या गया है? मैं चाहता हूं कि तमाम इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटीज को यह बता देना चाहिए कि गैर मुस्लिमों से शादी नहीं करनी। In my country, India, if the children of a Muslim parent marry a non-Muslim, 99% they'll be thrown out of the family. Here, the parent is very happy. My daughter is marrying a Christian, my daughter is marrying a Hindu, my son is marrying a Hindu lady and he wants to become Hindu, and they laugh. What's happened to the Muslims of Indonesia? I want all the universities in Indonesia, in the Islamic studies, to make it a point that do not marry non-Muslim. I'm shocked.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यह वाज़ेह है कि कोई भी नौजवान, चाहे वो गुलाम हो या बदसूरत हो, अगर आपके पास शादी के लिए ऑप्शन है कि मुसलमान से करें या गैर मुसलमान से, तो आप मुसलमान को चुनें, क्योंकि यह रास्ता आपको जन्नत में ले जाने वाला है। मैं मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि आप गैर मुस्लिमा से शादी मत करें। When we go to a minority Muslim country, they excommunicate the person. The parents dishonor. Here, make it very clear that if you have an option between marrying a non-Muslim, who may be the king of the world, who may be the most handsome man, who may be the most beautiful, who may be Richard Gere, anyone. He may be Bill Gates. But a Muslim man who's a servant, who may be the most ugliest man in the world, he is far superior because he has Iman. If you have Iman, you will go to Jannah. I want to tell the Muslim men, do not marry non-Muslim women. She may be the most beautiful woman in the world, not Indonesia. She may be the most wealthiest woman in the world. She may be a queen. But if you have a mu'mina, a believing woman, who may be the most ugliest woman in the world, who may be a slave woman, she is far superior because she will take you to Jannah. She is your muhsana. The Quran says your wife is a muhsana. Muhsana means fortress against the devil. If you marry a non-Muslim, they are a fortress of the devil, not against the devil. नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स या खातून मौजूद है जिसने गैर मुस्लिम से शादी की, और आप उसके बारे में क्या गुमान रखते हैं? हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।